Just see them before you open this. And the second problem is this P2 might again be with the real indices. So for example, P2 might become like 5.3 and 10.7. This might be P2. So you have one location that is a valid location, I, j, and you just transform that using A, and then you end up having this location. Okay, then you go to this location. Again, implementation today it is good to make these numbers integers. Okay, because this index should be again, just see that the minimum number should be floor and the maximum number should be C1. So anyways, when you go for P2 and this P2, it turns out that the location is not integer location. If this shift value, and this shift value, let's say this shift value is 10 and this shift value is 100, let's say. So then adding 10 here and adding 100 here ends up again, the fractional part stays the fractional. So this becomes 15.3 and this becomes 110.7. Now the question is that this is not a valid location in I1. The valid location in I1 is either 15, 110, or it is 16, 110, or it is 15, 111, or it is 16, 111. From there you can pick the intensity. So what should we do? One obvious thing that comes in mind is, okay, round it, make it nearest to the closest integer. So this will become 15, this will become 111. But then there are several other numbers, for example, 15.4 and 110.6, they also go to the same thing. So ऐसा हो सकता है कि source image में multiple points हों और सिर्फ rounding की वजह से वो target किसी एक point के ऊपर override करते हैं. That's a problem. Second problem is, let's say we scale up the image and the original image was 10 by 10 and we just double the image in every axis. So the new image becomes 20 by 20. So we have only 100 numbers to place in 400 locations. So the 100 numbers, they can at max occupy 100 locations. The rest 300 locations, what should we do for them? Okay, one solution might be we first place the 100 numbers and then we fill the numbers by copying the numbers that are placed to the neighbors. So that is okay. This copying may have certain pattern. कि अगर हमने scaling की है तो इतना इधर और इतना इधर copy करोगे इतना. But when we come to the rotation and some complex shearing kind of stuff, then we copy the numbers to the destination, and then the copying pattern will not be that straightforward. Make sense? So one thing, if our original image has 100 pixels and the resultant image has 400 pixels, for example, any 100 pixels से वो 400 locations fill होंगी, and that is true. इन्हीं 100 locations को use करते हुए, इन्हीं 100 pixels को use करते हुए, we have to fill the 400 locations. That is true. But there should be a systematic pattern of filling these 400 positions. That should not be visually unappealing to generate blockiness effect or unfair copying or stuff like that. Make sense? To care for all these problems, there is a very cool kind of trick here that I'm going to use. That is for systematic copying. That's all. If I say, so for example, if you have 100 numbers, you want to place 400 numbers, and you place the 100 numbers at 100 locations, and then you copy, you may have a complex pattern of these 400 numbers. I'm going to give you the systematic way of identifying which number should be copied to it. And that trick also will handle the overwriting problem. A pixel is placed, a pixel has an intensity placed there in I2. Then another pixel should not replace or not overwrite in I2. So I will now fix two problems: overwriting and the fair copying sort of. लो पे भी जा सकती है, हाई पे भी जा सकती है. consider low case अगर लो पे चली जाती है, इधर low पे चली जाती है वो
सपोज 6000 का 4000 का यस 4000 6000 का मैच करना है, हर चीज़ तो इंटेंसिटी होती है ना। यस तो लेकिन वहाँ पर अगर क्या बेटे सुन अगर जब हम वो 2000 का जो जाएगा उसको कॉपी करेंगे तो तस्वीर और नहीं एकदम से बन जाएगी। तस्वीर और ना जी इंटेंसिटी आपके पास ओरिजिनल इमेज है I1 जिसमें 6000 नंबर है, जो I2 है उसमें 4000 यानी 4000 का 6000 में कॉपी होना है 4000 पे 4000 की नहीं I1 में हमारा देख नहीं जा रहे I1 के नंबर्स उठ के I2 पे जाएंगे ना 6000 4000 पे आ रहा है। ऑब्वियसली अगर आपके I1 के अंदर 6000 नंबर है ये था ना कि जब शेयर होगा तो इसमें आएगा जी तो ये दोबारा जब जाएगा दोबारा नहीं जाएगा दोबारा हमें को लिख रहा है फर्स्ट करें आपके पास I1 है जिसमें 4000 नंबर है, आपने उसको शेयर किया या कुछ भी किया, आप जो रिजल्टेंट इमेज है उसमें 6000 नंबर है, 4000 नंबर उठ के 4000 नंबर पे जाएंगे, बाकी 2000 खाली रह जाएंगे, उनको फिल कैसे करना है, दैट्स वन प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम इज कि हमारे पास ओरिजिनल इमेज में 6000 नंबर थे, तो जो ट्रांसफॉर्म में होके इमेज आई उसमें 4000 नंबर है, अब 6000 नंबरों ने 4000 लोकेशंस पे मैप होना है, तो बाकी जो 2000 हैं क्या वो थ्रो हो जाएंगे या कहाँ आ जाएंगे इन, और इस तरह के और कई इश्यूज आप सोच सकते हैं, they will all be handled very systematically, I'm going to show you that, ठीक है। और इसका गोल ये है कि विजुअली आपकी जो ट्रांसफॉर्म इमेज है वो विजुअली अपीलिंग हो, सही। सो लेट्स फिक्स दिस प्रॉब्लम, समझ में आ गई है जो हम फिक्स करने जा रहे हैं। फिक्स हम करने जा रहे हैं, अगर हम I1 से एक इंटेंसिटी उठा के I2 पे रखने जाएंगे यार प्रॉब्लम्स कहाँ पे समझ आ रही है। सो लेट्स रिवर्स दिस, ये मैं रेज कर दूं या इधर लिखूं, प्रॉब्लम 1 Problem 1. I have this intensity value. This is intensity value at location ij. I of that. I have this intensity. I also have the transformation matrix A. So the question is where to place this intensity in I2. The answer is simple. Place at this location. Place at this location. That's the solution. Okay? Problem 2. I have location I2, J2 and I have A. Okay, from where to get intensity, ये अंग्रेजी गलत हो सकती है, मैं बात में इसका from where to get intensity for location I2, J2. So मेरे पास I2 मैट्रिक्स के अंदर, टारगेट मैट्रिक्स के अंदर लोकेशन है I2, J2 और मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है A। I2, J2 पे इंटेंसिटी कहां से आनी है, इसका जवाब देते हैं। From where I should get the intensity at location I2, J2. Inverse. I have intensity Ij, where this intensity goes there. From where the intensity will come at I2, J2. A inverse Ij. A inverse I2, J2. Duty. yes, no. Yes. Convince yourself that this is the case. अगर I2, J2 पे इंटेंसिटी कहीं से आनी है तो कहां से आनी है, A इनवर्स ऑफ दैट, और वजह उसकी ये है, उसकी वजह ये है, फिर गौर से देखिए, अगर I J पे इंटेंसिटी आती है, I2 J2 पे इंटेंसिटी आती है
वो इस फॉर्मूले के थ्रू आती है। लेट्स से कोई आइडियल लोकेशन है जिससे इंटेंसिटी I2 J2 पे आनी है, तो I2 J2 पे इंटेंसिटी किस जगह से आनी है, हाउ टू ड्राइव दैट, जस्ट टेक A there. This simple trick has a lot of benefits. A lot of benefits. Rather than having an intensity and calling for where I should place this intensity, I have an intensity at 1,1. I should place it where? Okay, there. I have an intensity at 1,2. Where should I place it? Okay, there. I have an intensity at from 1,3. Where should I place it? There. Oh no, there is already an intensity there. What should I do? Make sense? Or maybe. Okay, you should do this. You should. Okay, throw this at the simulation. Okay, throw the simulation. Fine. Now the second problem is this. I have I2. Oh, I have 400 pixels to fill. I am sitting at the first pixel. From where I should get the intensity for this? I should get the intensity for this from there. Okay. Now I want to fill this position. From where I should get the intensity for this pixel? From there. Okay, fill this position and so on. Now, one loop is from I1 to I2. Another loop is from I2. Apply the loop on I2. Rather than having an intensity and throwing it I2, loop over I2 and seek for intensity. That will solve a lot of problems. The first solution is, it is automatic copying. See that? It is very systematic kind of copying. अगर मेरे पास 100 नंबर थे और उन्होंने 400 नंबरों पे कॉपी होना है, तो देखिए ये कॉपी कितनी ऑटोमेटिक हो गई। मैं पहली पोजीशन पे खड़ा हूँ, तो मैंने A इनवर्स अप्लाई किया उस पोजीशन पे 1,1 ऑफ I2, उस पर मैंने A इनवर्स अप्लाई किया, तो वो लोकेशन आई है जहाँ से इंटेंसिटी आनी चाहिए। मैंने उस लोकेशन से इंटेंसिटी उठा के रख ली। समझ आ गई? अब मैं दूसरी लोकेशन पे गया हूँ। दूसरी लोकेशन पे जब मैंने A इनवर्स अप्लाई किया, तो फर्स्ट करें वही लोकेशन आई जहाँ से इंटेंसिटी इस पे आनी चाहिए। वो इंटेंसिटी यहाँ पे आ गई, तो वो इंटेंसिटी दो मुख्तलिफ जगहों पे कॉपी हुई है ना, लेकिन कॉपी बड़ी सिस्टमैटिक ले गई। अब किसी और लोकेशन पे किसी और जगह से आनी थी, किसी और लोकेशन पे किसी और जगह से आनी थी। Everything is happening systematic. समझ आ रही? Yes, no. Yes, that's a good question. What about borders? चूंकि जब हम I2 के ऊपर लूप कर रहे हैं, तो हम उन पोजीशंस पे भी लूप कर रहे हैं जहाँ पर इंटेंसिटी कहीं से नहीं आनी चाहिए। Yes, क्योंकि हम तो लूप यहाँ से शुरू करेंगे ना। हाँ। चलते जाएंगे। What about border pixels? जब आप border pixels पे A inverse अप्लाई करेंगे, तो जो लोकेशन निकलेगी वो I1 की बाउंड से बाहर आएगी। तो आप एक चेक लगा दें, अगर लोकेशन जो है वो I1 की बाउंड से बाहर है, तो डोंट डिस्टर्ब। तो आपका बॉर्डर जो है ऑलरेडी बॉर्डर काला रह जाएगा, आपने ऑलरेडी जीरो से इनिशियलाइज किया। यस नो। अब एक आखिरी बात और फिर हम कोड कंप्लीट करते हैं। एक आखिरी बात छोटी सी। So let me change this code. Let me change this code a bit. Help me writing this code. For I2 is equal to min R to max R. For J2, min C to max C. What should I do? P2 is equal to outside the loop compute inverse of A. yes. बार बार कंप्यूट करने की जरूरत नहीं। Do not compute it every time, just compute it outside the loop. Inverse of A. P2 is equal to inverse of A static I2 colon J2. Okay? Next. I'm assuming right now that P2 has integer indices. We'll fix that problem. That's how the problem that remains.
If P2 has integer indices, what should we do? I2 के I2 J2 पे I2 minus min R plus 1 yes J2 minus min C plus 1 equal to I1 P2 1. P2 2 That's it. that's it. That's it. Yes, no. Yes. This translation, I already have told you why this translation is required. If min R is minus 10, min C is minus 100, it should map to 1. And so on. उससे प्रॉब्लम सॉल्व की जी अगर उसने भी पॉइंट्स मतलब अब सिर्फ जो एक प्रॉब्लम रह गई वो ये कि P2 अगर पॉइंट्स में आता तो होगा। मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। मैं अभी आपको बताऊंगा अगर आप सिंपली राउंड भी कर लेना इसको P2 को, ठीक है। it works। वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे भी बस है ना नहीं आएगा, नहीं आएगा। कोई पॉइंट ओवरराइड नहीं है। ओवरराइड इसलिए नहीं होगा कि आप जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह को आपने दोबारा कभी विजिट करना है। Yes. ओवरराइड तब होता पॉइंट ना जब एक टारगेट लोकेशन को मल्टीपल टाइम्स आप देखते हैं। तो ये ऑलरेडी होगा लेकिन ये एक से ज़्यादा पॉइंट्स हैं ये एक ही लोकेशन पे कई That is copying, that is systematic copying। अगर आपके 100 पिक्सल से उन्होंने 400 लोकेशन पे मैप होना है, copying has to happen। 100 को 100 पे मैप होना तब ये प्रॉब्लम नहीं है that I'm going to fix। You're correct। That I'm going to fix। सही है जी? So far so good? Okay, last problem। Last problem। Let's say your P2 is again 5.3 and 10.7. So let's say this is a box 5, 10. Let's say this is a box in I1. This is I1. I'm talking about I1. This is location 5, 11. This is location 6, 10. And this is location, let's say 6, 11. Let's say here we have intensity, let's say 50. Here we have intensity, let's say 100. Here we have intensity, let's say 70. Here we have intensity, let's say 155. Clear? You are seeking intensity from this is 510, this is 511. And that's how the images के अंदर pixels ऐसे होते हैं। ये तो मैंने रास्ता करके दिखाया ये असल में जुड़े हैं। सही है? लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस स्पेस में देखेंगे तो इनके दरमियान पॉइंट्स के अंदर काफी सारी चीजें हैं। ये अगर 5, ये अगर 10 है तो 10.1, 10.2, 3, 3, 3, ये 11। सिमिलरली, यस। अब अगर 5.3 को आप देखें तो अगर ये 5 है 5.3 यहाँ पे है 10.7 शायद यहाँ पे। आप इस जगह से इंटेंसिटी उठाना चाह रहे हैं, इस जगह पे इंटेंसिटी नहीं है। ऐसा ही है ना? आप इस जगह से इंटेंसिटी उठाना चाह रहे हैं, दिस इज 5.3, 10.7। इंटेंसिटी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ। आपको क्या करना चाहिए? तो क्लोजेस्ट अगर आप उठाएंगे तो यू आर डूइंग राउंडिंग। तो हर जगह पे आप क्लोजेस्ट उठा लेंगे, राउंडिंग करेंगे। एवरेज क्यों करें? एवरेज क्यों करनी चाहिए? सॉल्यूशन इज एवरेज। एवरेज क्यों करनी चाहिए? So if you like now 50 and now 100, इस पॉइंट में उनके in between होंगे जो दो पॉइंट्स हैं जितना डिस्टेंस है उसको एवरेज करके वो उस पॉइंट So excellent. To get that's a very good explanation. To get a visually appealing transformation, आप जिस जगह से intensity सीख करना चाह रहे हैं, वो उस जगह पे it looks like कि ये भी contribute कर रहा है, ये भी contribute कर रहा है, ये भी contribute कर रहा है, ये भी contribute कर रहा है. This location is not completely owned by some point. सही है? So a better way should be to take all these and average these intensities and place the average intensity at the target location. Make sense? इसमें भी एक छोटा सा issue है. वेट टू डेवलप होनी चाहिए। इसमें भी एक छोटा सा issue है. This location will be having same average. This location will be having same average. This location will be having same average. जिस पर weighted नहीं होता है उसका weighted average. Exactly. So the solution is weighted average. Yes. Good. So the solution is the following. Solution is the following. By the way, आप सबको समझ आ रही है बात? सबको बात समझ आ रही है? If you are not getting this point, please raise your hand so that I can revise things. weighted average करके सॉरी मैं explain करता हूँ. यहाँ पे आई पहला solution था कि राउंड करना. राउंड में एक अनफेयरनेस आती है वो ये
कि ये पॉइंट कंप्लीटली इसने क्यों ऑन कर दिया, इसकी इंटेंसिटी आ गई थी, इसने कहा नहीं मैंने भी जाना था, ये मेरा भी कुछ लगता है करीब है। ठीक है, तो अगला जवाब है अच्छा इन सब की एवरेज कर, ये भी नाराज ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, सबकी एवरेज कर। सही है, अब एवरेज की तो अगर लोकेशन यहाँ पे आएगी तो एवरेज वही आनी है। अगर लोकेशन यहाँ पे होती यानी 5.6 एंड 10.1 होती तो आप इन्हीं चारों की एवरेज होती है। तो इस हर लोकेशन के लिए सेम इंटेंसिटी जा रही है, हालांकि कभी वो पॉइंट इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है। होना ये चाहिए ये पॉइंट जिस पिक्सल के जितना करीब है उस इंटेंसिटी को एवरेज में उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। दैट इज व्हाट वेटेड एवरेज। मेक सेंस? So far so good? Yes. Okay. Now let me give you one algorithm for computing weighted average. There are several others. ठीक है जान दे, तस्वीर बन रही है, ये कैमरे पे आ रहा है। Is this visible? Oh yes. Okay, great. किसी बच्चे को दे देना, किसी बच्चे को दे देना। मैं आगे पीछे मूव कर रहा हूँ। नहीं वो भी करता रहेगा कौन सा। Contents की बात करें। Okay. So हम टाइम ज़ाया नहीं करते क्योंकि हम बड़े क्लाइमेक्स पे पहुँचे हैं। So let's see. Okay, this location is 5.3 and 10.7, and let's say this location is, let's say this is 0.1, this is 2, this is 3, this is 4. So मैं इसके साथ इस लोकेशन के साथ डिस्टेंस निकालता हूँ। मैं देखता हूँ ये पॉइंट इस पिक्सल से कितना दूर है। So मैं कैसे निकालता हूँ? 5.3 minus 5 square plus 10.7 minus 10 square root. I'm calling this as D1. Yes? Yes. That is the distance of this location from this location. Similarly, I can compute D2, D3 and D4. ये तो मसला है, क्या? ये तो जिसके ज़्यादा करीब नहीं आ जाएगा, जिससे ज़्यादा करीब होगा। Yes, the weights are reciprocal. अच्छा ठीक है 1 ओवर कर देंगे आप। Yes. So we have D1, D2, D3 and D4. Yes. Now W1 is 1 over D1. ओके फिट हो गया। W2 यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आज कुछ चेक्स लगाने पड़ेंगे। अगर D1 is 0 तो वो इस कंडीशन में हैंडल करेंगे, डिस्टेंस 0 है तो एग्जैक्ट कॉपी होएगा जाके वगैरह, कुछ इस कंडीशन से लगा दें। 1 over D2, W3 is 1 over D3, W4 is 1 over D4. Now the intensity that is going to be copied there is the following: 50 times W1 plus W2 times 100 plus, if you see that, W3 times 70 plus W4 times 150. So far so good? Yes. With one problem, very little problem. जब आप एवरेज लेते हैं तो ये जो एवरेजिंग पैरामीटर्स होते हैं ना सारे, they should add up to 1. यहाँ पे हमने इंश्योर नहीं किया कि W1 plus W2 plus W3 plus W4 it adds up to 1. Yes. So these weighting parameters they should add up to 1. Why is that? अगर ये add up to 1 नहीं होंगे तो क्या होगा? मैं एक मिसाल देता हूँ। फर्ज करें, यार ये सुने बात को बॉस। फर्ज करें यहाँ पे भी 200 है, यहाँ पे भी 200 है, यहाँ पे भी 200 है, यहाँ पे भी 200 है। तो आप जहाँ मर्जी पॉइंट प्लेस कर लें, जो इंटेंसिटी ऊपर कॉपी होंगी, जो मर्जी वेटेड एवरेज ले लें, वो 200 होनी चाहिए। यस? मैं कुछ कंट्रीब्यूशन इधर से लूँ, जब सारे कंट्रीब्यूटर्स ही सेम हैं, तो 200 होनी चाहिए। अगर ये वेट सारे ऐड अप टू 1 ना हो, तो वो इंटेंसिटी इधर जो है, यानी कि सबका वेट 1 से कम हो या 1 से ज़्यादा हो, तो या जो इंटेंसिटी कॉपी होगी वो 200 से कम होगी या 200 से ज़्यादा होगी। And in that case, the transformed image will become either brighter or darker. Make sense? नहीं समझ रही। दोबारा से देखें, अगर यहाँ पे भी 200 होता, 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 तो इमेज रोटेट हुई या स्केल हुई तो इंटेंसिटी तो यही जानी चाहिए था। अगर ये वेट और ये वेट और ये वेट और ये वेट ये सारे इनका ऐड करके 1 नहीं आता, या 1 से छोटा है या 1 से ज्यादा है, तो फिर जो इंटेंसिटी आप ऊपर लेके जा रहे हैं उस इंटेंसिटी को या ब्राइट करके लेके जा रहे हैं
यानी इंटेंसिटी को स्केल करके लेके जा रहा है। यस तो ना सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होगी स्पेस के अंदर, इमेज ब्राइट या डार्क भी हो जाएगी, और हो सकता है मुख्तलिफ हिस्सों में ब्राइट हो जाए, मुख्तलिफ हिस्सों में डार्क हो जाए। कि 200 आप कॉमन निकाल रहे हैं और फिर वो ओवरऑल वैल्यू है वो बहुत बड़ी इंटेंसिटी स्केल हो गई। So this averaging here, averaging in general, the parameters of averages they should add up to 1. Otherwise, that is not defined as an average. समझ आई है आपने? Average is actually expected value or somehow whatever. Make sense? Yes. Okay. So to do that, there is a very simple formula. Wi dash is equal to Wi over W1 plus W2 plus W3 plus W4. That is Wi dash. Now you have W1 dash, W2 dash, W3 dash, W4 dash. Yes. W1. Place this. W1 dash, W2 dash, W3 dash, W4 dash. That's it. That's it. Sorry? Sir, around is average calculation. There are quick ways of implementation of this algorithm. I am telling you the nitty-gritty details. जो इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है, जो बड़ी फास्ट इम्प्लीमेंटेशन है, वो बिटवाइज ऑपरेशंस है, और वो तो ऐसे चलती है, उसमें कोई डिस्टेंस कंप्यूट नहीं करना होता है, एवरीथिंग हैपेंस लाइक दिस. So you can come up with faster implementation, so that's what that should happen at the back end. Okay. Yes. एक दिन अगर ये बता दें कि P1 बता दें कितना निकला है तो जी हाँ. So D1 is the location 5.3 and 10.7. The distance of this location from this location. दो लोकेशन आपस में कितनी दूर है? बस पॉइंट नहीं समझ आ रही है. सही है. ये पॉइंट जिस लोकेशन पे कितना करीब है उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगा. Make sense? Now what you have to do is you have to write the code of this, the averaging kind of here, and then you are good to go. अब ये इंटेंसिटी ऐसे नहीं आएगी. अब ये इंटेंसिटी वो एवरेज है जो पीछे से आ रही है. ये एवरेज यहाँ पे होगी. और अब आप ध्यान में रखिएगा कि जब आप इमेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसमें जो हल्की सी ब्लाइंड का इफेक्ट आता है वो क्यों आता है? क्योंकि हर नई लोकेशन पे जो पिक्सल पड़ा होता है इट इज एक्चुअली अ वेटेड एवरेज ऑफ सेवरल पिक्सेल्स. तो जब आप पिक्सेल्स की एवरेजेस ले लेते हैं you get a kind of blurring. लेकिन चूंकि आप एवरेज, अगर आप सिंपल एवरेज ले रहे होते तो ब्लरिंग बहुत ज़्यादा होता. आप वेटेड एवरेज ले रहे हैं कि जो इंटेंसिटी आनी चाहिए वही है, ज़्यादा हो रहा है. इसलिए विजुअली फीलिंग दिस एल्गोरिथम इज आई मीन empirically the best. Visually this is good. There are other averaging methods as well. There is a cubic interpolation and other as well. By the way, ये जो अभी आपने मुझे एल्गोरिथम बताया ना खुद कि यार इसकी एवरेज ले लें और फिर इसकी वेटेड एवरेज ले लें, इस एल्गोरिथम का बड़ा एक भयानक नाम है. अच्छा. इसका नाम है जी बाइलिनियर इंटरपोलेशन. अच्छा. यानी ये जो मुझे आपने बताया ना कि ये ऐसे करते हैं, दिस इज कॉल्ड बाइलिनियर इंटरपोलेशन. और मैं नाम आपको बता देता हूँ इसको क्यों ये कहते हैं. बाई कहते हैं जी दो, लीनियर इस केस में हम लाइनें ले लेते हैं. एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, दो लाइनें. इंटरपोलेशन कहते हैं कि मुझे एक पॉइंट गिवन और दूसरा पॉइंट गिवन, उसके दरमियान कोई पॉइंट जनरेट करना यूजिंग दीस टू. दिस इज कॉल्ड इंटरपोलेशन. सो आपने इस जगह पर जहाँ पे इंटेंसिटी थी नहीं समहाउ जनरेट कर दी है, और वो इंटेंसिटी यहीं से उठाई ना. बिल्कुल. तो आपने इंटरपोलेट किया यहाँ पे इंटेंसिटी यूजिंग दीस. But this is not one dimensional, this is two dimensional, and these are two lines. That is why it is called bilinear, two lines and then interpolation. वाह. Make sense? जबरदस्त. यानी अगर अब आपसे कोई पूछे इंटरव्यू में कि वर्किंग कैसे करते हैं और ये आप सारा बता दें, और फिर वो आपसे पूछे कि do you know anything about bilinear interpolation? आपने
नहीं सर वो सर एडवांस कंप्यूटर विजन है बस दैट यू डन मेक सेंस okay last thing and then we will quit I need just 2 more minutes how to implement homography this is a 2 by 2 minutes actually one yes So ये भी है सर एट सर पॉइंट में आ सकता पॉइंट इंटेंसिटी पॉइंट आ सकती है लेकिन जो कि इंटेंसिटी की रेंज 0 से 255 होती है इंटेंसिटी को आप राउंड कर लें तो इंटेंसिटी को राउंड करना यानी इंटेंसिटी 155 एंड इंटेंसिटी 160 156 they do not have a visual difference at all so you just round the intensity that's not it that's a good question so averaging करने के दौरान जो बाद में इंटेंसिटी है that might be number just round that do not have a great visual effect okay how to implement homography homography is a 3 by 3 matrix which means everything should be homogenized yes okay I'm going to implement homography now H 1 1 R R 1 C 1 C append 1 1 1 1 homogenize every point yes then apply this H make sense now before actually computing this mins and max non-homogenize every point आपने हर पॉइंट को homogenize किया था जब H से ट्रांसफॉर्म किया है तो उसका जो थर्ड नंबर है वो ज़मीनी 1 है फॉर एग्जांपल आपके पास था 1,1,1 इसको आपने H से मल्टीप्लाई किया हो सकता है जवाब आए 5,9,3 तो एक्चुअल लोकेशन क्या होगी 5/3 9/3 सही है तो यहाँ पे एक स्टेप आपने ये करना है कि P is equal to P dot slash P third row डॉट स्लैश मींस के इसको थर्ड रो को पकड़ो और इस थर्ड रो से पूरे मैट्रिक्स को डिवाइड कर दो तो होगा ये कि पहली रो जो कि रो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी थर्ड रो से डिवाइड होंगे दूसरी रो जो कि कॉलम कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी थर्ड रो से डिवाइड होंगे तीसरी रो जो कि स्केल फैक्टर्स हैं वो भी थर्ड रो से डिवाइड होंगे आफ्टर दिस डिवीजन the row coordinates are completely non-homogeneous form the column coordinates are non-homogeneous form and the third row is 1 1 1 1 and you can delete the third row. You no longer need the third row after you have this scale factor. So add these 2 lines P3. This is how you can delete a row in MATLAB. Wow. So far? Okay. Rest of the story is same except here. यहाँ पे मैंने A use किया है, just use H. Here you have I2 J2 comma 1 and you will get P2 so what should you do now P2 is equal to P2 dot slash P2 third number yes so just add this line after this line add these 2 lines and you have implemented homography projective working वहाँ पे इन्वर्स H है ना inverse H नीचे देखें बात सुनें मैं किस पॉइंट से उठा के लाऊं इंटेंसिटी को I2 J2 1 इस पे इन्वर्स होमोग्राफी लगाइए यहाँ पे जवाब आया 15 10 3 तो 3 से डिवाइड करेंगे तो वो पॉइंट निकलेगा तो नॉन होमोजेनाइज करना पड़ेगा just non homogenize here just non homogenize here and you have power of implementing 2D homography okay having this you have the complete code अगर आपने इसकी तस्वीर लेनी है इसमें कुछ डिटेल्स होंगी implementation वाइज फिल कर लें काफ़ी सारी डिटेल्स होंगी इन लोगों में और अब आप होमवर्क पे लाते शुरू हो जाओ होमोग्राफी because अगर कैमरा ट्रांसलेट ना करे तो 2 images are created by homography तो 2 कैमरे थे वो प्रोजेक्टिव फॉर्म वो होमोजेनियस फॉर्म में अवेलेबल थे उनका प्रोडक्ट और जो एक्चुअल बना वो होमोजेनियस फॉर्म में अवेलेबल है तो अगर मुझे एक मैट्रिक्स एक इमेज गिवन हो और प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो नॉन होमोजेनियस फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगा इट इज मोर पावरफुल देन डिवाइड ट्रांसफॉर्मेशन हाउ कैन यू इंप्लीमेंट दैट बातों को सुने फिर इस गौर से
So that's nice. That's a good question. Good point. अगर कैमरा ट्रांसलेट होने से नहीं बचा सकते, थोड़ा बहुत ट्रांसलेट हो भी जाए, then you'll be having a stitching that has a very minor kind of noise, or maybe that noise is invisible. Noise होगी. That's fine. वो तो मार्किंग में भी आएगी जब जी इनपुट करेंगे. Make sense? तो आप 4 की बजाय ज़्यादा पॉइंट्स ले लें, जो मार्किंग नॉइज है वो कम से कम होगी, फिर भी नॉइज रहेगी. उस नॉइज को भी जब आप DLT से करेंगे, जब पिक्सल है, विजुअली वो मैथमेटिकली वो नॉइज रहेगी. मैथमेटिकली अगर आप कहेंगे पिन पॉइंट कर दिया आपने 0 ऐड, तो ये पॉसिबल नहीं. हाउ बेटर विजुअली यू कैन अचीव द रिजल्ट, दैट्स द थिंग. सही है जी. ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू.